Hi everyone, welcome to the Real Room with Prabdeep and this is Women Who Inspire. आज हम बात कर रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। हम सबने सुना है वर्क हार्ड, स्टे हम्बल एंड लेट योर वर्क स्पीक फॉर इटसेल्फ। लेकिन आज की दुनिया में सिर्फ हार्डवर्क नहीं, विजिबिलिटी भी मैटर करती है। तो सवाल ये है, क्या पर्सनल ब्रांडिंग सिर्फ मार्केटिंग है या वुमेन एम्पावरमेंट का एक बहुत पावरफुल टूल? एंड टू डिस्कस दिस वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस, Miss Ritika Singh. Ritika is a global brand strategist, founder and CEO of Content Factory, entrepreneur, startup mentor, executive council member of TIE Women Global Board. So without wasting time, let's welcome Ritika Singh. पर्सनल ब्रांडिंग के बेसिस के ऊपर ही आपके बिजनेस ब्रांड्स बनते हैं। आप सेल्फ प्रमोशन इज यूजुअली सीन एज अ नेगेटिव वर्ड, तो आपका कॉन्फिडेंस जितना मर्जी हो, कितना अच्छा आपका स्किल सेट हो, सब कुछ हो, आप कहते हो कि मेरा काम ही मेरे लिए बोलेगा, दैट इज नॉट ट्रू। Visibility is very important. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड फॉर द राइट थिंग्स। सो अब हमारे पास वो बहाने नहीं है कि मेरे को पता नहीं था या मुझे आता नहीं है। नाउ देयर इज largely a lot of things available. दो हम लोग जितना मर्जी बोलें कि क्वालिटी है, इकट्ठे चलते हैं, हम लोग एक ही हैं, कोई बायस नहीं है, बट फिर भी बहुत सारा डिफरेंस है। That yes, women get judged far more than men do. बचपन में हमारी मॉम्स हमें यूजुअली यही कहती थी कि घर पे कोई आया तुम कमरे में चले जाओ, बालों को लाल पीला हरा मत करो, लिपस्टिक रेड मत लगाओ, ज्यादा जोर से हंसना नहीं है, लड़कियों की आवाज ज्यादा ऊंची नहीं होनी चाहिए, धीरे बोलो, प्यार से बोलो, आंखें नीचे करके बोलो, डोंट लुक एट पीपल डायरेक्टली इन द आई। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव बीन कंडीशन्ड विद। मेन गेट अवे विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। आई मीन एंड नोबडी इज गोना जज हिम एक्सेप्ट मी। मेरे पास एक स्किल है, बट आई डोंट नो हाउ टू promote myself, how to get into that visibility light, कैसे मैं आऊँ उसमें। So वो कहाँ से क्या चीज शुरू करें? Personal branding starts at the day you decide to say कि आज से मैं ये बिजनेस शुरू करूँगी। ठीक। Ritika, welcome to Women Who Inspire. Thank you so much, Prabdeep, for having me here. And Ritika, you are basically into marketing, strategy and brandings. That is correct. Right? Right. So what is, हमने एक नया word सुना है, personal branding. What's Right. that? I'm glad you asked this question because a lot of people think branding is something that oh हमने अपने 2-4 सोशल मीडिया के पोस्ट निकाल दिए तो हमने अपनी ब्रांडिंग कर ली। सो ब्रांडिंग इज अ लॉन्ग गेम। आप ब्रांड 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में नहीं बिल्ड कर सकते। एंड पर्सनल ब्रांड सो इज प्रॉबेबली फ्रॉम द टाइम यूर 10 years old, 11 years old, 12 years old, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग वहीं से शुरू हो जाती है। नाउ यू विल आस्क मी व्हाट डज दिस इवन मीन? इट इज द परसेप्शन of you as a person and it is not thanks to social media. पहले क्या होता था प्रदीप, that हमारी पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ जमीन आसमान का फर्क होता था एंड nobody really knew too much about our personal lives, है ना। हमें प्रोफेशनल लाइफ का भी कम नॉलेज थी, पर्सनल, और ये दोनों बहुत ही अलग अलग कैटेगरीज में थे, whether you were an entrepreneur or a corporate person, whatever it is that you were doing. Now because of social media everything has come under one category only, which is called personal branding. Your personal branding is basically the perception of you, what people think about you, how they relate to you, how they remember you, what their thought process is about you, whether you are in the room or you're not in the room. That fundamentally is personal branding. Okay. And it starts from usually when you're 12 years old, 13 years old, when children start making sense of the world. उससे पहले वो छोटे होते हैं, उनको समझ नहीं आता हमारे आसपास क्या हो रहा है, but then they start making decisions that whether I need to do this or not to do this. Should I do math in the morning and should I do physics in the evening? So वो छोटे छोटे decision making से उनको confidence आना शुरू हो जाता है, and from there when they start taking decisions is when your personal brand is built. And it's very simple. You know that even amongst our, we are older now, but you remember the time when we were younger, हमने सारे अपने friends को categories में डाला हुआ था कि she is like this, he is like that. तो वो ही आपकी personal branding है. So if you just say that, oh, I met Prabdeep, is such a warm, such a nice person, she's so welcoming, always smiling, so that becomes your personal brand. And आजकल personal branding, because especially when you're being an entrepreneur, personal branding के basis के ऊपर ही आपके business brands बनते हैं.
It's always betting on the founder. So who you are as a person will also help me decide whether I want to work with you or not, whether I want you as my co-founder or not, whether I want to be a service provider with you or not. So all of those things now become suddenly very, very important. And the older we grow, whether no matter what we end up doing in life, कुछ भी कर सकते हो आप, but your personal brand you carry with you for the rest of your life. Personal branding and self promotion, is there any difference between हाँ, that? बहुत फर्क है. See, self promotion is about getting attention, Okay. but when we talk about personal branding, it is about getting recognized. Now, these are two absolutely different things. Self-promotion is usually seen as a negative word. It usually has a negative connotation. हम लोगों को बचपन से man or woman जो भी हो बताया जाता है कि ज़्यादा boast नहीं करने की ज़रूरत होती है ना? Stay humble. हमारी सारी कहानियाँ अमर चित्र कथा वाली सारी यही होती है. Never boast about yourself, etc., etc. But now the world is a very different place. Now you don't have to sit and say कि अच्छा my work will speak for itself. मेरा पहले काम देख लो and then, I mean, that doesn't work. You have to be seen in the right communities, the right people, on the right platforms to be heard. So आपका कॉन्फिडेंस जितना मर्जी हो, कितना अच्छा आपका स्किल सेट हो, सब कुछ हो, आप कहते हो कि मेरा काम ही मेरे लिए बोलेगा, that is not true anymore. Unfortunately, the world does not work like that Visibility anymore. is very important. It is very, very important and for the right things. आप visibility तो आप जितना मर्जी cringe content बना लो, आप डांस का एक वीडियो डाल दो, you know, not, and I just say this with a lot of respect for people who put dance videos. I'm not saying anything against them. I'm just saying वो भी डाल दो, वो भी आपकी personal branding है. But you should be known for what you stand for. So I always say that 12, 13, 14, 15 years के बाद children should start building a worldview of their own, which essentially means the view of the world. Now, पहले क्या होता था, हमारा worldview usually हमारे parents, हमारे घर के आसपास communities में जो लोगों की सोच होती थी वही हमारी भी हो जाती थी, है ना? Because there was no other exposure. If you would go out of that little city or your mohalla or travel abroad or do something, then you'd probably have a different perspective towards life, understand something else from a completely different point of view. But now with social media, there is no excuse. There is just so much of content around you. You can pick up any topic and start talking about it if you understand it well. And that becomes your skill set and that also becomes your personal brand. So अब हमारे पास वो बहाने नहीं है कि मेरे को पता नहीं था या मुझे आता नहीं है. Now there is largely a lot of things available. And now you're fighting for space on social media. They're just, all of us are on social media. पहले वो होता था ना कि कुछ journalists, only 5-7 exclusive ones used to write, and their voices were heard and their voices were appreciated and valued. Up to everybody is there is absolutely no filter to be on social media. Anybody who has a voice or can talk, can dance, can do sing, can do anything, acrobatics कर ले, you can be on social media. So there are no filters. Now आपका कोई skill set का कोई filter नहीं है, आपके thought process का कोई filter नहीं है. So I always say that visibility for all the right reasons is very important. आप नहीं भी हो, I know a lot of my friends who are not on social media at all. उनकी भी जिंदगी अच्छी खासी चल रही है. The kids are fine, family life is good, सब ठीक है. They just don't want to be on social media. So how can we connect social branding, personal branding on social media? So it depends on the things that you like, for you business don't like. Purpose. So see, when initially if a woman देखो, I don't, हम वो नहीं करते women और men में, but फिर भी आजकल के जो women है, फर्क है, बहुत दो फर्क है. दो हम लोग जितना मर्जी बोलें कि इक्वालिटी है, इकट्ठे चलते हैं, हम लोग एक ही हैं, कोई बायस नहीं है, बट फिर भी बहुत सारा डिफरेंस है. एक लड़की अगर सोशल मीडिया पे है, कुछ ब्रांडिंग अपनी प्रमोशन कर रही है, या वो डांस, कुकिंग कुछ भी है, उसको एक कहीं ना कहीं नेगेटिव फीडबैक्स मिलते हैं जो कि बंदे को नहीं मिलते. कम मिलते होंगे पर कम मिलते होंगे, है ना? तो वहां पे अगर किसी ने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो हाउ वुड, मतलब उसको कैसे स्टार्ट करना चाहिए? So see, 3-4 things you've touched here, Pradeep. The first thing is that the women angle, that yes, women get judged far more
than men do. ये बात तो पक्की है ना? And it all comes from the kind of social conditioning we've had for years and years of about patriarchy, etc., है ना? Women are largely taught to take up lesser space in the room. अगर आपको भी याद होगा, you were the mother of 2 children, and बचपन में हमारी मॉम्स हमें यूजली यही कहती थी कि घर पे कोई आया तुम कमरे में चले जाओ, है ना, छोटे कपड़े मत डालो, अटेंशन अट्रैक्ट मत करो, बालों को लाल पीला हरा मत करो, लिपस्टिक रेड मत लगाओ. द होल आइडिया ऑफ इट वाज टू नॉट अट्रैक्ट अटेंशन. वो चाहते थे कि लड़कियां, बिकॉज द मोमेंट यू कुड बी, बिकॉज देयर वाज सो मच ऑफ रॉन्ग अटेंशन बीइंग गिवन, our mothers, our fathers were overprotective about us because they could not control the world outside, and it is a horrible place even today. You're also a mother, I'm a mother, we understand that. There are certain things our daughters cannot do even if they want to, purely because the world outside is not a safe place for them. Our sons may get away with a little more extra freedom, etc. वो हो सकता है because they are not as much as at risk. हालांकि अब तो उनका भी हमें पता नहीं लगता. It's such a horrible world out there, right? So women are always told to take lesser space in a room. आप छोटी छोटी बातें होती हैं, बोलो ज्यादा जोर से हंसना नहीं है, लड़कियों की आवाज ज्यादा ऊंची नहीं होनी चाहिए, धीरे बोलो, प्यार से बोलो, आंखें नीचे करके बोलो, don't look at people directly in the eye. So these are the things that we've been conditioned with. अब ये पहले जमाने में चल देता था कि you are a, और तुमको एक डेफिनेशन दे दी थी गुड गर्ल. सो इट्स कॉल्ड द गुड गर्ल सिंड्रोम, दैट यू आर द वन हु इज कीपिंग क्वाइट ऑल द टाइम, प्लीजिंग एवरीबॉडी, सबकी ईगो मसाज करना तुम्हारी जिम्मेदारी है. अगर 4 लोग लड़ रहे हैं आपस में, irrespective of whatever, you cannot get up and take a stand on this thing. So you were always supposed to be the good girl. 2 लोग लड़ रहे हैं, तुम peace maintain करो, कोई तुम्हारे से लड़ रहा है तो तुम back off कर जाओ. Now that is not true anymore, because now when you're running a business, when you become an entrepreneur or even a corporate executive for that matter, you need to be seen for all the right reasons. You have to take up space in the room. Men think कि हम कितना फैल सकते हैं यहाँ पे. Women will say कि how much space can I take here? How much can I talk? Do I have to balance it out? I hope people don't perceive me as this, people don't perceive me as that. So, you know, these are some of the things, and I've realized that we've all done this. I mean, I'm 51 years old today, Pradeep. Till about 2-3 years back, I was again doing this. I mean, being familiar, though now I have become a bit of a, you know, staunch feminist. I've started questioning, I've started understanding what is wrong with this system. बहुत सी जगहों पे अभी भी मेरे में हिम्मत नहीं होती है to raise my voice to say कि this is not right and what you're saying is wrong. Not a very popular person amongst the men then, because when I liked, you know, questions, I mean, just about a week back, we met these couple of people. We were traveling to Bhutan, and one of them, they're all our age group, है ना? So हम पहली बारी, second time, third time मिल रहे थे, and coincidentally in the same hotel. So we were just sitting and having a drink in the evening, and general stuff बातें हो रही थी. And then I just asked one of the guys, I said, so how big is your family? So he said, I have a son and a daughter. I said, great. So I said, how old is your son? So he looks at me and he goes, he's either 22, he's either 23 or 24. So I'm like, dude, I mean, this is just basics, right? So the point I'm just trying to make here is that men get away with a lot of things. I mean, and nobody's going to judge him except me. हम 8 लोग वहाँ बैठे थे, किसी ने उसे जज नहीं किया. But ये question वहाँ पे अगर कोई मेरे से पूछ लेता कि रितिका, how old are your children, मतलब, and I don't know the answer. I mean, I'm the worst mother in the world kind of a thing, right? Absolutely. So there is a bias, and you and I are entitled, Pradeep, you know it, I know it, right? That we get a lot of what we really want. We can sit here and make as many podcasts as we want to, but there is still a larger section of women who do not have that access even to speak. Forget about being seen or heard. आप घरों में ही उनको इजाजत नहीं होती अपने घर में बोलने की, तो बाहर पॉडकास्ट पे बैठे तो हम और आप तो बहुत entitled है. And when they talk about this, that you know, women equality वगैरह, that is only for a few hundreds of them. Those who've made it because of X reason, Y reason, Z reason, जो भी है, they've made it. But largely that is not true. That is one part of the story. The second part, I believe, is when you're becoming an entrepreneur, there is absolutely no replacement for your skill set. You have to be damn good at what you do. है ना? अब होता क्या है? This is something I've been saying for a long time, that the world over, people are okay to pick an average man for a leadership role. Let us say he gets a 5 out of 10. But if the woman is a 7 on 10, they would still prefer a man 5 on 10 than a woman 7 on 10, because the woman is not 10 out of 10.
she's not got full marks yet. So leadership roles में क्या होता है, या जब आप लोगों को कोई जिम्मेदारी देनी होती है or something needs to be done, they will still pick a person 5 on 5 if he's a man, but a woman 7 on 10 will also not get picked vis-a-vis both of them against each other. So I've always said that we have to work harder, है ना. So वर्क हार्ड तो चलो है ही है, दैट इज फाइन, वी आर ट्राइंग टू फिगर इट आउट. सारी दुनिया चेंज हो रही है, वर्ल्ड ट्रांजिशन में है, फेमिनिज्म के झंडे लहरा रहे हैं हर जगह. द मेन आर आल्सो कंफ्यूज, उनको भी बेचारों को पता नहीं चल रहा कि ये सही है ये गलत है. सम ऑफ द थिंग्स यू एंड आई आर आल्सो ट्राइंग टू फिगर आउट, राइट. बट हैविंग सेड दैट, देयर इज नो रिप्लेसमेंट फॉर हैविंग अ ग्रेट स्किल सेट. यू आर डैम गुड एट व्हाट यू डू. वंस यू नो दैट पार्ट, once you know that I'm very sure about this, that is when you start building your personal brand through your skill set. I mean, there are other ways to do it as well, but you specifically asked me for a woman, you specifically asked me if you're an entrepreneur, you just have to go out there and start to sell your business. Okay. Like you said, the women just need, that's the first step towards the, you know, अपने skills दिखाने का, that is the first step of visibility. अब she doesn't have money or she has restricted financials. Right. So अगर एक lady ने अपना online business शुरू करना है या अपने brand को, whether she's selling suits, whether she's into cooking, whether she's dancing, whatever skills she has, ठीक है, she's selling a jewelry, makeup, anything. बट अगर उसको लगता है कि मेरे पास एक स्किल है, बट आई डोंट नो हाउ टू, यू नो, प्रमोट माई सेल्फ, हाउ टू गेट इन टू दैट विजिबिलिटी लाइट, कैसे मैं आऊँ उसमें. सो वो कहाँ से क्या चीज़ शुरू करे? देखो, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ. दिस इज अ लाइफ स्किल. दिस इज समथिंग दैट आई टेल एवरीबडी, irrespective of age, gender, background, whatever, that all of us need to be extremely self-aware. We don't work on our awareness कि हमें कितना समझ आता है कितना नहीं आता. We don't work on ourselves. So it's something that nobody has ever taught us, and ना कोई इसके बारे में बात करता है. But I have been doing this for a long time now, that it's not for the world to see or whatever. I need to first understand myself, that what kind of person am I? What are the things that I like or dislike, or what is my deal in life? What is my worldview? What is my point of view? What are the things I would stand for? What are the things which are non-negotiable for me? How much can I perform? How much can I do? What am I really good at? What is something that I really absolutely suck at? Etc. etc. So a lot of self-awareness, and this again starts once you beat your 20s. 21, 22, 23 में आके आपको कुछ चीज़ें अपने बारे में, वर्ल्ड के बारे में समझ आनी शुरू हो जाती है ना. सो सेल्फ अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Now, the thing about social media is that it's very unforgiving. You make one mistake and you can be trolled like crazy, and then you would have, it will take years again to build that kind of reputation. So, I always say that once you are on social media, be very, very thoughtful about what you're posting. There are a lot of people, गुस्से में, anger में, painful, कोई hurt हो गया किसी चीज़ से, and they'll just keep on putting out content. I always tell this to myself also and to my children also, that wait for a day. If you still feel the same about something, or you still feel strongly about something, which could be controversial or could be taking up a stand or something, wait for 24 hours. अपना ड्राफ्ट बना के रख लो कि अगर ये कल तक भी, if I feel the same, 99% of the times वो feeling आती है और वो निकल जाती है, right? So one never posts when you are mad or angry or sad, or you're having a breakup or anything. You should always give yourself some time, because once it's out there, it's out there. There's nothing which can erase it, right? And people make mistakes, it's fine, we're all humans, right? But having said that, I think for a woman entrepreneur with no money, no this thing, I always say कि 2-3 चीज़ें कर लिया करो. एक तो चैट जीपीटी के हेल्प ले लो अगर आपको नहीं समझ आता सोशल मीडिया पे, because it's not everybody's game. I'm a content creator, everybody is not. So take the help of social media and say, okay, here is my jewelry brand, this is what I do. Can you suggest 5 creatives or 5 social media posts that I can put out? So you are fine. Basics आपका चल पड़ेगा, मतलब वो अर्थ चार्टरिंग नहीं होगा, क्रिएटिविटी वो नहीं होगी, बट आपका ब्रांड कहीं ना कहीं पे विजिबल होना शुरू हो जाएगा. You start working on social media. Second, you have to walk the talk, because what I'm trying to say here is, Pradeep, that people initially, when the business starts,
people, your first set of customers is usually people you know, है ना. हम लोग कुली करके अपने भाई बहनों को, फ्रेंड्स को, सबको इकट्ठा कर लेते हैं. बियॉन्ड अ पॉइंट वो नहीं वर्क करेगा, बिकॉज आपको थोड़ी बहुत वहां से ऑर्गेनिक ग्रोथ मिल जाएगी, पर उसके बाद यू विल हैव टू डू मच मोर देन जस्ट बी समवन्स फ्रेंड टू कंटिन्यू गेटिंग दैट काइंड ऑफ you know exactly from your customers, right? So you have to build customers at some stage. So wahan pe I always say that currently you are the bigger brand than the business brand that you're building. So for example, Ritika Singh, when I started, people only knew me as a person. They had no idea what Content Factory is all about, कि वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते. So they were betting on me that okay, we know Ritika, we've heard her speak, we know that she does good content. So your personal branding is the most important. Yes, because initial stages के ऊपर the business brand piggybacks on your personal brand. ठीक है. आपको भी पता है, मुझे पता है, you are here because I know you. I don't know the name of your podcast. I don't know anything else. You also just know me as a person. आपको Content Factory की ज़्यादा details पता भी नहीं होंगी. आपने research किया होगा थोड़ा बहुत, आपने website पर गए, 4 line निकाले, then you know. But you really don't know what is Content Factory, and you don't even care beyond a point. It's only on Ritika Singh that you are betting, right? Absolutely. So I always say that specifically for women entrepreneurs, personal branding starts at the day you decide to say कि आज से मैं ये बिजनेस शुरू करूंगी. आई थिंक वो पहला दिन होता है आपका जब आप हालांकि आपका बैकग्राउंड भी बहुत मैटर करता है ना. फॉर एग्जाम्पल, लेट अस से आई स्टार्टेड माई entrepreneurial journey at the age of 38. There were still people who were willing to, because they were still my friends who knew me for 15 years, 20 years. When I came to the city in Chandigarh after Bombay, बहुत से लोग मुझे जानते थे. So business was not a problem. And then I found a mentor. So things happened. That was 100% basis my personal branding. And personal branding में, this is what makes people invest in you, mentor you, guide you, be friends with you for that matter. So I think it's like a whole gamut. और हम इसको इंडिया में तो, और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो बहुत ही ज़्यादा अंडरप्ले करते हैं. और हम लोग we come out with those very I would say immature lines to say that a lot of people say मैं तो ऐसा ही हूँ या मैं तो ऐसी ही हूँ. I mean, you're not getting it right. There are certain you cannot be like that. I mean, that is what 5-year-olds do. कि मुझे तो ये lollipop अभी चाहिए, तो मुझे तो ये अभी चाहिए, and then they will lie down on the floor. Personal life और आपकी family तक तो वो ठीक लगता है कि हाँ मैं I don't want to change myself. But when you're coming onto the business, when you were starting something or promoting your own personal brand, तब मुझे लगता है कि आपका कहीं ना कहीं aura चेंज होना चाहिए. अगर आप आपको सेल्स ही होना चाहिए. I think the only thing is that you have to get salesy. I don't understand founders who can't sell. आप नहीं जीत सकते. आप जितना मर्जी आपका प्रोडक्ट अच्छा हो, जितना मर्जी आपका मार्केटिंग की टीम सॉलिड हो, जो मर्जी कर लो, but if the founder cannot sell, then that is the only thing that changes. But you remain the same person. आप as a personality change नहीं कर सकते अपने आप को. You have to walk the talk. If you are an introvert, the only thing is now that I take like 5 days to open up to someone, but here you don't have those 5 days to pitch something to a business, right, or a client. You just have those 5 minutes. So 5 minutes जो कर सकते हो कर लो. So sales is the only thing which I feel that changes once you become non-entrepreneur to entrepreneur. बस एक वो चीज मेन बदलती है, बाकी your persona remains the same. Largely वो change नहीं होता और जरूरत नहीं होती उसके, unless until your business demands that okay, like I am that kind of person who doesn't like to travel at all. मुझे वो एंग्जाइटी हो जाती है कि अच्छा मुझे अभी सूटकेस पैक करना है, उसमें ये डालना है, मैं को घर वो मैनेज करना है, पौधों में पानी कौन डालेगा, ये वो, it becomes too much for me kind of a thing. But now I realize कि अब तो ठीक है, it's okay, I can do this. So अगर मुझे कहीं पे कोई ट्रैवलिंग जॉब करनी पड़ी तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी. But then I got an assignment, now I'm traveling, I'm like out of the city 4 times, 5 times in a week. That means you need to come out of your comfort zone. You have to, and you have to push your boundaries, because see, you also have to understand what works for your business. I am currently mentoring this cohort from Goldman Sachs ka 10,000 women program with IIM Lucknow, and so many of them says we don't even, I mean, like one of them literally said that I've never made a single sale, never went and spoke. She's part of BNI. BNI is a hardcore transactional business to business kind of a community. वहाँ पे वो hello hi networking के लिए नहीं जाते, वो धंधा करने जाते हैं वहाँ पे कि तुम कितना मुझे business दे रहे हो, मैं तुम्हें कितना दे रही हूँ. And it's very clear. I mean the fund is very clear. She says never made a pitch about my business. She's been part of BNI for 3 years and she's running a business for 12 years. And I was like, how do you think your clientele will grow?
So I always say that become part of communities which support entrepreneurship, because first time entrepreneurs ke liye it can get a little overwhelming. Second thing I always say is that align your stakeholders. You know, it's easier. You can't fight so many battles. And like if I wanted to be an entrepreneur, I'll probably take a buy-in from my mom that mama meko naukri nahi karni, and you know this 9 to 9 thing is not working out, I want to do this. So that's one stakeholder aligned. So there will be times, mama, I'll not be able to do this, I'll not be able to do that, can you take care of the kids? The same thing I will go to my sibling, to my brother and ask that, you know, मैं ये नौकरी छोड़ना चाहती हूँ, नहीं बन रहा मेरा हिसाब. So ऐसे करके आप अपने spouse के साथ चले जाते हो. So you decide, and once you get their support, the journey becomes slightly more comfortable, because हम इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं, but entrepreneurship की journey में आपके पर्सनल, आपके फैमिली रिलेशनशिप्स पे बहुत इम्पैक्ट होते हैं. बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर दिस वन जेंटलमैन who does I'm under NDA, so can't take his name. We wrote a couple of blogs for him. I'm talking even before COVID. And uska ek article just went absolutely viral that obviously the content was given by him only. हमने सिर्फ उसको beautify किया था. That he says, how I started my business at 40, I quit a corporate job and started a chain of so he says, I've learned this from him while writing for that gentleman. I'm talking 6-7 years back, that aligned all my stakeholders. So he says, पहले मैं अपनी बीवी के पास गया, फिर मैंने बच्चों से बात करी, then my sister, my जीजा, my in-laws, my parents, everybody. He says, and then I said, and I still remember very clearly, he said, मेरी बीवी ने मुझे एक ही चीज बोली थी कि देखो तुम्हें जो करना है कर लो, बट एक मेरा घर नहीं बिकना चाहिए, मेरे किचन का खर्चा निकलना चाहिए, और मेरे बच्चों की एजुकेशन इम्पैक्ट नहीं होनी चाहिए. At 40 you're allowed to take risks, but ये 3 चीज़ों के लिए मेरे assets, मेरे आपको जो करना है कर लो. I'm willing to support you. I'm willing to sacrifice my this thing. I will not go for a family vacation. वो मैं कर लूँगी, but ये 3 चीज़ें मेरी आप हिला नहीं सकते. बाकी जो खेलना आप खेल लो. These 3 things have to be my. Then you do whatever you want to. I think it was such a beautiful way of kind of expressing, because entrepreneurship can get very lonely, especially if your ecosystem or the people around you are not, if they are mostly in corporate jobs. So problems ही हमारी अलग होती है. मतलब हमारे तो यहाँ 3-3:30 बजे 4 बजे भी सुबह उठ के हमें वो स्ट्रेस हो जाता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मेल्स आनी जानी शुरू हो जाती. Not that I'm saying that corporate people have lesser stress, but it's a different kind of stress, because here the buck stops at you. I mean, you are 100% accountable for your business. आपको HR भी करना है, आपको IP legal भी देखना है, आपको सब कुछ करना है. But if you're working for a corporate, you just have one role to play. The others you don't have to manage. यहाँ पे तो जितनी fire fighting है आप ही को करनी है. You only have to do it. So entrepreneurship one में अगर आपको घर से support नहीं मिल रहा है, man woman both for that matter, women additionally so, because they are the ones who are largely in the North Indian context, contributing far more in the house, you know, unpaid labor जिसको हम बोलते हैं, whether it is taking care of the kids, etc. So अगर आपके पास support system नहीं होगा, आप 10 साल में burnout हो जाओगे. In 10 years maximum you will have a burnout, and 40-50 पे आके then I'm taking a break in life. And then you are literally जो 10 साल की आपकी मेहनत है वो zero हो जाती. So women entrepreneurs, I always suggest that align all your stakeholders so that you are not in that crazy mind space where you are saying मैं business भी build कर रही हूँ, मुझे बच्चे भी देखने हैं, मुझे घर जाके खाना भी बनाना है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है. वो burnout आपका 100% पक्का है. I've gone through it, so I'm telling you, and I've gone through it twice. I mean, there was literally like 2-3 years back, I had a severe burnout. मेरा किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा था. 6 महीने तक आई डिड नो बिजनेस बिल्डिंग, कोई कोलैबोरेशंस नहीं, कुछ नहीं. वो टीम बेचारी रोती पिटती, जैसे भी दे मैनेज, दे वुड कॉल मी, आई वुड टेक कॉल्स, आई वुड डू एवरीथिंग. आई से ठीक है यार, छोड़ नहीं मिलता, क्लाइंट तो इट्स ओके, आई कैन रन आफ्टर देम, हो गया जितना होना था, यू नो. सो इट टुक मी, बट 6 months के बाद आई गॉट माई मोजो बैक, एंड दैट्स नॉट अ फेयर थिंग ऑन एनीबडी. नोबडी शुड बी गोइंग थ्रू दैट, मैन और वुमन बोथ. मेन गेट इट अ लिटिल दिस थिंग लाइक, अब वो ट्रैवल कर लेते हैं, वर्क के लिए कर लेते हैं, बिकॉज देयर इज, दे नो दैट समवन इज सिटिंग एट होम टेकिंग केयर ऑफ द किड्स एंड द हाउस एंड एवरीथिंग, व्हाटएवर इट इज, राइट. समबडी इज शोल्डरिंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देम. विमेन के लिए वो, हमको तो फिर सुपर वुमन बनना होता है, हमें ये भी करना है, हमें. आई मीन इट्स अ मिथ इन माय हेड. आई डोंट नो व्हाट अ सुपर वुमन इज. आई मीन इफ यू आर, if Superman is real, then Superwoman is real. But you know it, I know it, that Superman is not real. So there is nothing called a superwoman. It's just society's patriarchal way of
गिविंग यू मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अरे उसको देखो, वो जिम भी जाती है, उसका फिगर भी बिल्कुल परफेक्ट है, वो काम भी पूरा अपना करती है, उसने बच्चे भी सारे संभाले, उसका घर भी बिल्कुल स्पिक एंड स्पैन है। Dude, it's burnout. This is a literal You're recipe playing of with a the mental burnout. health and physical, Absolutely, emotional, and everything exactly, and of a you're woman. constantly performing. फिर हम कहते हैं cortisol levels high हो गए, फिर 45 के बाद हम सब लोगों को autoimmune diseases हो जाते हैं, because we are just, I mean, now at this stage I've started to say no. I mean, मेरा तो I पहले was no just का, about to ask, so what is the best solution for this? the best solution is one, aligning your stakeholders. Like I said, that you need that support system. So I can easily go to my mom and say कि mom अगले 3 दिन हमारी conference है, वो टाई की conference है, 3 दिन मैं सुबह से लेकर रात तक busy हूँ, so there's nothing I can contribute. आपको कुछ emergency होगी, कुछ दिन call me, otherwise 3 days I'm out of the. So my mom will understand कि अच्छा 3 दिन मेरा बच्चा busy है, तो उसको छेड़ना नहीं किसी चीज़ के लिए, कोई additional work नहीं है। उसके बाद 3 दिन खत्म हो जाते, चौथे दिन आके मैं खुद ही माँ के पास बैठ जाती हूँ, से अच्छा मम्मा बताओ कुछ काम आपके करने वाला है, कोई बैंक का कुछ काम है, any issue in the house that you want, just to help her out and make her feel more. She can't shoulder responsibility. She's 76 years old. So आपको अपने stakeholders align करने पड़ते हैं. There will be times when my mom is unwell, but my brother and bhabhi stay with us. So there has to be some way that I can tell them, no, I have to go for this meeting or this podcast or whatever. You please take mom to the doctor. Or my mom will Maybe understand. it's just an adjustment. It's a very between the thing, family. but it gives me a lot of leeway to perform better. And there are times when even on Monday mornings, I've just opened Netflix at 10 a.m. and 11 a.m. and sat there just because I was having a bad day, or I just want to chill, or I've just had just too much overwhelming one week, and I was like, यार आज Monday है, 10 बज के घर बज के, and I was like, whether you know the morals inside you, the ethics inside you, यार रितिका, you can't do this. सुबह 10 बजे Monday morning बैठ के Netflix कौन देख रहा होता है? I mean कुछ और कर लो, किताब पढ़ लो, कुछ कर लो। मैंने नहीं यार, मेरे को बहुत overwhelming, मुझे किताब पढ़ने की भी हिम्मत नहीं है। I will just let my brain rot for 2 hours, and then you're back again. So everybody has to find coping mechanisms to see, but this is not sustainable. जो पहले हो रहा था वो सुपर वुमन वाला वो नहीं कर सकते, and the men are not equipped to handle this now. I mean they're all lost. मैं कई बार ये सोचती हूँ इस चीज़ को कि आपने देखा होगा, हम कहते हैं men are not emotional, उनको छोटी छोटी बातें समझ नहीं आती, उनको पता ही नहीं चलता मेरा फेवरेट कलर कौन सा है और what kind of food I like, है ना? This is spousal conversation. But then I just look at the same people in their professional ecosystems. उनको सब पता रहता है ना, कि बॉस को कौन सा कलर पसंद है, बॉस का मूड आज खराब है, क्या चीज़ मैं ऐसी बोलूँ, क्या नहीं बोलूँ, उनको सब पता रहता है। अपने ऑफिस में अपने काम के बारे में सब पता होता है, दे नो एवरीथिंग, दे गिव देम द नंबर्स, दे विल डू इट, है ना। बॉस का आज मूड खराब है तो आज मीटिंग कैसे जाने वाली होगी, सब दे कैन लिटरली प्रिडिक्ट ऑल ऑफ दैट। तो सडनली घर में एक सिजर्स ढूंढने के लिए उनको इतना चैलेंज क्यों हो जाता है? It's not that they don't understand it. They do. उनको अपने bosses, अपने colleagues, अपने super bosses, they are hyper vigilant at that point in time. That what is the right thing to say? What is the right thing to do? How am I supposed to behave? How is it that you don't do the same thing at home? You understand what I'm saying? So it is just male and time. ये तो मेरे को ये नहीं समझ आता that how can you be a high performing person outside in the world but you can't find a pair of scissors at home. That part I don't understand. So it just means that घर पे you're just taking things for granted that somebody else is going to do it for you. So तुम छोड़ देते हो उसको कि ये तो मेरा mind space ही नहीं है, but that's not how it works. So I still understand places where there is a housewife and there is a working man. तो उनके you know ठीक है, काफ़ी कुछ clarity है that she's taking care of the home, ये वो this and that he's taking. But अगर मैं उसको और भी आगे देखूँ, he's still the one who gets the money at home. वुमन की वैल्यू वहाँ से आती है। मेरे को उस दिन किसी ने ये बात बड़ी अच्छी सी बताई थी कि आदमी पैसा कमा के लाता है तो सुपीरियर नहीं हो जाता। वो इसलिए बिकॉज जब तुम पैसे घर ला के देते हो तुम अपने बच्चों के मुंह में पैसे नहीं डाल रहे होते हो। तो somebody is converting that money into a home, into food, into security, into safety, into teaching, learning, values. Somebody is doing that. That is the, I mean, घर में आके पैसे जितने मर्जी बेड पे रखने आप रख लो, उसका करोगे क्या? What will you do? You cannot do anything because you need someone to at least convert that into, you can't, मतलब पैसे तो नहीं खा सकते आप। वहाँ से एक वैल्यू समझ आती है। दूसरा, I think what changes is that for a house
wife's chores, the sense of responsibility for everything becomes overwhelming. So her system never shuts down. उसको कभी नहीं आपने देखा होगा 2 घंटे अब सब चले गए तो मैं बैठ के अपना आराम से I can just in the evening sit and not worry about it. Her mind is constantly working, constantly. For the men, what happens is when they go to office and once they come back, stress उनको भी होता है, no doubt about that. But they are allowed to switch off. अब रात को 11 बजे तो 12 बजे बैठ के वो नहीं. But for a woman, her mind never switches off because there's just too many tiny details to be taken care of. So I just feel that if you don't have someone to share it with, you have to build a support system around you. There have been days where I remember that if I had to run somewhere, I have called up friends for favors. कि यार please make sure my daughter को तुम जा रही हो तो तुम birthday party में एक बारी मैं drop कर दूंगी, तुम जाके ले आना. और please तुम ये हफ्ता कर लो pick and drop and I will figure it out next week kind of a thing. So ये support system बगैर आप नहीं function कर सकते. I mean you will just lose yourself in the process. Either health will go for a toss or you will not be able to perform at your level best. So women, they need to have a support system and align their stakeholders. So how, अब जैसे हमने एक बोला कि stakeholders होने चाहिए. अब if a woman want to start a business online, तो वो कौन से platforms को उसको practical platforms को pick करना चाहिए? Pradeep, that depends on the kind of business she's running. If it's a very visual business, like you mentioned, कि आप jewelry बना रहे हो, आप boutique चला रहे हो, कुछ कर रहे हो, then Instagram, you have to see where your audience is. अगर आप let us say you're running a school, right? तो school में तो parents, mothers, अगर डिसीजन मेकर्स हैं तो इंस्टाग्राम पे आ जाओ, या अगर थोड़ा सा वो है तो फेसबुक पे आ जाओ. अगर आपको लग रहा है कि नहीं देयर इज एजुकेशन कोलैबोरेशन दैट आई वांट विद द यूनिवर्सिटी अब्रॉड, देन यू नीड टू मेक श्योर दैट यू पुटिंग द राइट कंटेंट ऑन लिंक्डइन. सो एवरी प्लेटफॉर्म हैज इट्स रोल टू प्ले. बट इंस्टाग्राम पे लार्जली आपको विमेन ओरिएंटेड बिजनेस वहीं से मिल जाता है. सो इंस्टाग्राम पे इफ यू आर प्रिटी एक्टिव एंड कंसिस्टेंट and delivering good quality content, you should be able to get on to a good start. So is it like she can start without any more of a financial support from the family if she doesn't have? Again, depends on the kind of business. Like, so I am a work from home business the last 13-14 years. तो मेरे तो कोई zero investment है. एक लैपटॉप खरीदा और एक फोन है, भाई यही मेरी इन्वेस्टमेंट है. That's all that I do. और एक वाईफाई का कनेक्शन तो वैसे भी by default हर घर में अब होता ही होता है. So I have zero investment in my business, right? So it depends on what kind of stage, what kind of business and what stage. So and ambition levels भी बहुत different होते हैं. Pradeep, I still remember there was this lady at a salon here in Sector 44. She's doing a great job. My mom and I go to her for the last about 5-7 years. I just go for a haircut. I get very restless in places where I have to sit. So वो मैं घबरा जाती हूँ. So I just go only for a haircut once in a while. So I just told her one day that, you've done a damn good job with this and I love what you do and your salon is doing great and, you really pamper, quality अच्छा है, stuff is very good. I said, you should open one more outlet in Panchkula and one in Mohali. So she looked at me and said, but why? So then I asked her, I said, because, why का मतलब क्या होता है? You say expansion करो, ये करो. कहती मुझे करनी नहीं है expansion. I'm very happy with this one thing. It keeps me busy और मैं यहाँ पे मुझे expansion में ambitious हुई नहीं इतनी. I said, that's a next level of awareness. I think she was very sorted. And that's when I also understood that women can want to do something but not be ambitious at all. But मेरे को problem वहाँ पे आती है when you undersell yourself. आप ये देखोगे when I'm doing these pitches with my mentees, वो सब from a 30 lakh company they want to go to a 1 CR company. तो हम उनको क्वेश्चन करते हैं ये 5 CR क्यों नहीं? अरे मैम 5 CR कैसा होएगा? मैं कब बनाओ तो सही ग्रोथ प्लान अपना पहले. लेट्स सी करो तो से हैव सम ऑडिशियस गोल्स इन लाइफ. नहीं होता. हम लोग यूजुअली अंडरसेल करते हैं अपने आप, women especially. I have done this till about 1 year back where I walked away from profiles and designations thinking that no, I don't deserve it yet, but the other person does. I've just let that go, and that just so for that means visibility of the business depends upon the ambition of the woman. 100% yes. If you're जरूरी नहीं है कि अगर एक outshine कर रही है तो दूसरी भी outshine करे क्योंकि उसकी ambition ही नहीं है. उसकी ambition नहीं है and that's okay too. मतलब who am I to tell her कि नहीं तुम्हें ये करना चाहिए. हमने जब अपना Goldman Sachs में when we are helping the this women cohort make their business growth plan,
हम बोल रहे हैं कि देखो वी आर सिटिंग इन अ कार विद यू, वी आर टीचिंग यू हाउ टू ड्राइव, है ना, कि गाड़ी का स्टीयरिंग ऐसे पकड़ते हैं, गियर ऐसे चेंज करते हैं, एक्सीलेटर ये होता है, फलाना होता है, गाड़ी का देखभाल ऐसे करते हैं, तो हमने सब कुछ दिखाया, बट डेस्टिनेशन तुम डिसाइड करो ना, आई एम नॉट ड्राइव दैट कार फॉर यू, सो यू डिसाइड कि तुम्हें दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है, दिल्ली से लाहौर जाना है, पटना जाना है कि जयपुर जाना है, दैट इज योर डिसीजन, सो यू फिक्स योर गोल्स. माई जॉब देन एज अ ग्रोथ एक्सपर्ट इज जस्ट टू टेल यू कि अच्छा वहां जाना, वहां तक कैसे पहुंचेंगे. That is what so everybody has their own goalpost and हर एक के लिए सक्सेस की डेफिनेशन अलग हो जाती है ना. दिस गर्ल चीज मेरे लिए 1 साल होना, मैं बड़ी खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी, शी इज सो सैटिस्फाइड, शी इज नॉट cribbing, she is not crying, oh this or that. There are other people, women I know, but why not 100 salons across the country, why not? वो भी सही है. So who's deciding what's right or wrong? So that's why I'm saying that level of self awareness is very 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 important. Like if you अभी see the reels, अभी मैंने recently ये देखना शुरू किया है कि जैसे हम कहते हैं देहात बहुत पुराने, कोई अंदर बिहार यूपी की लड़कियां जैसे दे आर डांसिंग, तो वो डांस अगर कर रही हैं तो डांस वो 4 बंदों में भी दिखा सकती हैं, वो गांव वाले भी देख सकते हैं, बट दे आर ऑन द इंस्टाग्राम एंड दे रियली हैव अ गुड मूव्स. तो वो एक वहाँ बैठ के भी अपने आप को प्रमोट कर रही हैं. अब जैसे एक मॉडल थी, आई गेस वो गुरु रंधावा के उसमें आई है, तो वो आई रिमेम्बर जब से मैं उसको देखना शुरू हुई तो उसकी एक गंदी सी बॉल थी, शी यूज्ड टू मॉडल, एंड वहाँ से अब देखो तो शी इज अ मॉडल फॉर गुरु रंधावा. Yeah, I think I know which one. I follow her too on Instagram. I know whom you're talking. So I forget the name. I guess self promotion or branding. What is that? So see, I'll tell you. मतलब they are sitting, मतलब उनके पास कोई एक मोबाइल होगा, वो लड़कियां, मैंने एक ग्रुप देखा, वो 5-6 लड़कियों का, वो बिल्कुल टूटी सी ईंटें हैं जहाँ वो झोंपड़ियों में रहती हैं, वहाँ पे भी दे आर डूइंग एब्सोल्यूट, मतलब व्हाट अ ग्रेट परफॉर्मेंस दे आर डूइंग, जो मुझे लगता है कि हम डांस सीख के भी नहीं कर सकते, जो कि वहाँ पे दैट मीन्स दे डोंट हैव अ कोई इंस्ट्रक्टर देयर, वही लड़कियां आपस में डिसाइड करती हैं, कोरियोग्राफ करती हैं और डांस करती हैं. देन दिस मॉडल गर्ल, शी इज अ ब्लैक गर्ल, थोड़ी सी चबी भी है ना, और वो मॉडल करती है, पर उसने मॉडल कर करके एक ऐसे ब्रांड को परफेक्ट, एब्सोल्युटली, जैसे इंटरनेशनल मॉडल्स रैंप वॉक करती हैं, उससे भी मेरे को लगता है बेटर कर रही होगी. एंड उसने अगर एक अपने आप को ब्रांड बनाया, तो व्हाट वाज वो चीज़, क्या है वो, पर्सनल ब्रांडिंग है या विजिबिलिटी है या सेल्फ प्रमोशन है, व्हाट इज दैट, वो कैसे आ रहे हैं बाहर सारे? देखो वो 2-3 चीजें हैं. सम ऑफ देम आर जस्ट यूजिंग सोशल मीडिया टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, है ना. आप ये भी नोटिस करो कि बहुत से लोग, एंड दिस डिबेट आई हैड विद माय डॉटर लॉन्ग टाइम बैक, दैट सोशल मीडिया का पर्पस क्या है, why are we on social media? So somebody will say I'm not there for the likes, I just like to express myself and ये वो and this and that. That's also very good, है ना. कोई कहता है कि नहीं यार मेरे को likes चाहिए, कम से कम 100 likes तो आए, मैंने इतनी अच्छी ये रील्स पोस्ट करी हैं, whether it is on whatever ABCD, है ना, on my travel और जो भी करना है, वो भी अपनी जगह पे सही है. अब now the problem is that since there are no filters, I cannot stop you and you cannot stop me. There are no filters as to who can be on social media. It's an access given to every human being on earth, right? Now what they make of it, there is enough diversity. Now पहले क्या होता था, इतने सारे लोग थे, हमें उनके बारे में पता ही नहीं था, ये हमारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, बिकॉज हमारे को एक्सेस ही नहीं था उनका. अब हमें पूरी दुनिया में सब कुछ बैठ के पता है कि कौन क्या कर रहा है, क्या कंटेंट बना रहे, पॉइंट्स ऑफ व्यू क्या है, एक्सेट्रा, राइट. आई थिंक फॉर देम it is largely about feeling validated. Okay, because my daughter and I had this conversation कि social media के ऊपर अक्सर लोग validation के लिए जाते हैं. नहीं तो आप अपनी पर्सनल डायरी में लिख लो ना, ठीक है, आपको सोशल मीडिया पे वो पोस्ट डालने की क्या जरूरत है. आपको अगर आप कह रहे हो मेरे को लाइक्स नहीं है, मेरे को दुनिया से फर्क नहीं पड़ता, तो अपनी डायरी में लिख लो. हम तो पहले डायरियों के भी लॉक्स लगाते थे. आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर, बचपन में वी हैड दोस डायरीज की कोई डायरी ना पढ़ ले हमारी. अब हम उसको सोशल मीडिया के ऊपर डालें. सो ऑब्वियसली देयर इज, you want that validation from people around you, you want to show yourself in a certain light. That is one part. The other part is how do you get the right kind of attention. इतनी सारी नॉइज है वहाँ पे. डांस की वीडियोस ही आप खोलोगे तो करोड़ों करोड़ों खुल जाएंगे. उसमें आप अपनी जगह कैसे बनाओ, व्हाट विल सेल वी डोंट नो, नोबडी नोज दैट, राइट. सो एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू बी डिफरेंट. अरे इतनी बड़ी आबादी में आपको अपने आप को कैसे पोजीशन करके अलग अपने आप को दिखाओगे आप. तो या आप क्रिंज कंटेंट बनाओगे, आप कोई डांस वीडियो बना दोगे, कोई कुछ और कर लेगा, ज्यादा गट्सी होएगा, कुछ
और बना लेगी. So everybody is trying to create some kind of identity for themselves, right? कि कोई मेरा notice कर ले, मैं videos बना रही हूँ. I know so many young girls who will just started, they're doing something else, but doing social media influencing is something else. Like they will pick up one pants from a particular company, wear them, tag the company and say they are amazing. And she will do it with some cosmetic product, she will do it. वो धीरे धीरे करके उसके इतने सारे followers हो गए हैं कि now the brands have started to approach. So that is business strategy. There are others I know जो कोशिश कर रहे हैं, वो समझ ही नहीं आ रहा, कोई strategy काम ही नहीं कर रही है, बस वो लगे हुए हैं कुछ ना कुछ करने के लिए, right? So I wish that I could say, or someone else could say, even far more experienced than I am, that if everybody knew that what will sell, तो अब तक हम ये कोड क्रैक कर चुके होते हैं. Fortunately, nobody knows till date कि क्या चीज सडनली वायरल हो जाएगी. It has, आपको भी पता है, आप सोशल मीडिया पे there's some random stuff becomes so viral that is sometimes ये कौन कर रहा है ये, why are we even watching this in the first place? So I don't think it is called self promotion. I think that is again personal branding, because the moment you are on social media, you are a brand. अब how people perceive you, आप क्या action करते हो, आप क्या content create करते हो, that will again depend on what is it that you are looking for. But once you're on social media, like I have been very, very particular, being a content creator myself, and I do this for a lot of other clients as well, that I'm very particular. Before posting, I will try to see 5-7 angles, कि अच्छा कोई ये भी बोल सकता है, कोई ये भी बोल सकती है. कोशिश मेरी यही रहती है that sometimes I'm taking very controversial stands as well. I know I'm going to run into deep waters there, but ठीक है, it's okay, that's who I am. Then I say कि नहीं, it's all right. But we are all here. On social media, you're a personal brand for sure. Even before your own business brand becomes big, people bet on you. They will. I'm here because of Prabdeep, as a friend, as this thing. I don't even know the name of the podcast, like I mentioned earlier. So I think you are the brand till the business brand becomes bigger than you are. Then you piggyback on your brand. So in short, first you need to become a personal. आपका खुद की personal branding होनी चाहिए. True. ठीक है. Second, हम अपने business को कैटेगराइज करेंगे कि मैं क्या दिखाना चाहती हूँ, तो उसके लिए प्लेटफॉर्म हम अकॉर्डिंगली हम चूज करेंगे. बिल्कुल सही. कि लिंक्डइन पे जाना है, फेसबुक पे जाना है, मेरी इंस्टा पे जाना है, स्नैप पे जाना है, कि मेरी ऑडियंस कहाँ सेट है. या फिर ऑनलाइन अगर नहीं है तो बाहर कई चीज़ें ऑनलाइन भी नहीं बिकती. Like there are a lot of things. अब हम you have to become part of communities. You have to be with people who speak the entrepreneurial language. You have to understand how they work. You have to, and I think it's fantastic because Chandigarh, क्या world over now, there are so many entrepreneurial communities that you can be a part of, and सभी एक दूसरे को help करते हैं, assist करते हैं. You know, we share journeys with each other, try to understand that worked for you, that didn't work for me. It's a great ecosystem to have around you. But वो थोड़ा सा, you know, and हम लोगों की risk taking ability भी comparatively कम होती है. वो थोड़ी सी you start looking at life. I mean, I have a lot of men friends who are entrepreneurs. So they will kind of, you know, हल्का सा push me out of my comfort zone to say कि take this risk, देखी जाएगी क्या होगा types. मैं कहा no बाबा, I am not that person. I am करके तो देख एक बार shot तो मार, मतलब, you know, so you need to have those kind of people around you, those who will, you know, exactly, will push you out of your comfort zone to say why don't you try this, why don't you. But I always say that the game works once you know the rules of the game. आपको रूल्स आने चाहिए कि गेम क्या चल रही है यहाँ पे. मैं हमेशा बोलती हूँ, I say this to every person, whether it is my child, my son, my daughter, whoever, I will tell them, understand the game. You may choose to play it, you may choose not to play it, you may choose to break rules, you may choose to play by the rules, but गेम को पहले अंडरस्टैंड करो. हम लोग अक्सर वो गेम ही नहीं अंडरस्टैंड कर पाते. सो तुम क्या चाहते हो, what is it that you, so let us just say the game is to build a business of your own. Let us say कि मेरे को कल बुटीक में कपड़े बेचने हैं ना, so I'll style and whatever. So once I need to understand my industry, कौन खरीदेगा, मेरी ऑडियंस कौन होगी, मेरे बजट्स क्या है, मेरी पोजिशनिंग क्या है, मैं प्रीमियम कैटेगरी कर रही हूँ, मेरा 40,000 से सूट शुरू होता है कि मैं 1,00,000 1,50,000 से कम बात ही नहीं करती है. सो वो सारी गेम आपको पहले समझनी पड़ती है. इट हैज टू बी क्लियर इन योर हेड. Okay, that's why I say a lot of self-awareness is very important. Like when I came to Chandigarh, I was down and out financially, so मुझे था कि कुछ भी मिल जाए, I'm ready to do it. So somebody suggested teaching की job कर लो.
मैंने कहा टीचिंग मैं नहीं कर सकती, मेरे में इतनी पेशेंस नहीं भगवान ने बनाई कि मैं 40 बच्चे क्लास 4 क्लास 5 के पढ़ा लूं. clear with the vision I cannot do it because I don't have the patience for it, and I'm not a great teacher पर से, है ना. मेरे से मैथ के क्वेश्चन ना कराओ, इंग्लिश के ना कराओ, मेरे से लाइफ के बारे में बात कर लो, मैं कर लूंगी, बट ये बच्चों के साथ में बैठ के मैथ्स नहीं पढ़ा सकती उनको. दैट्स आई नो, एंड आई वाज आल्सो वेरी क्लियर. आई सेड आई नीड मनी एंड आई नीड टू ग्रो फास्ट, एंड टीचिंग विल नॉट गिव मी दैट. टीचिंग इज अ अनफॉर्चुनेटली वेरी lowly paid jobs, and there's no. I said मेरे पास इतना टाइम नहीं है लाइफ में. I'm starting my life at restarting my life at 38, 39. I don't have the I don't want to use the word luxury because teaching is such a highly underrated job, but I don't think I fit into that mode of, you know, कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, so I need to fasten something. So फिर किसी ने बोला टपरवेयर बेच लो. मैं कहा अच्छा ठीक है, चलो टपरवेयर भी बेच लेते हैं. पर मेरे में वो सेल्स वाला था ही नहीं कि मैं तुम्हारे पास जाऊँ तो मैं बोलूँ कि अरे यार मैं ये टपर. So I said ये भी नहीं होगा. It has to be something else. Then content came into the picture. Now my background is all masters in English literature. So vocabulary, you know, understanding content, copywriting, ये वो सब मेरे लिए easy था. तो वो तो घुस गए हम, तो फटाफट काम चल पड़ा वहाँ पे. That we started working. So that's why again I'm saying self-awareness is very important. What you can do, what you cannot do. Like when my younger brother decided to quit his job, he was a corporate employee for 18 years and done phenomenally well for himself. So he said, I want to quit my job and I want to be an entrepreneur. So I left Chandigarh. He was in Delhi. I went to him. I stayed with him for 7 days, telling him, don't do it. You will work best, you will perform best in this kind of an environment. You are not the person who will get up in the morning 9 o'clock and go because तुम्हें किसी client meeting पे जाना है या कुछ करना है. Because entrepreneurship में क्या होता है, nobody tells you to do anything. Whatever you need to, आपका ambition कितना है कि मुझे 5 करोड़ की कंपनी बनना है, 10 करोड़ की, only you are deciding for yourself. There is no target anybody is setting for you, right? Nobody is setting the target. Nobody, yes. And you have to be self-driven. I am like from day one of my life, I am very self-driven. कि मैं बड़ी competitive भी हूँ, मैं बड़ी सेल्फ ड्रिवन भी हूँ, कि मैं एम्बिशियस भी हूँ, कि मुझे जो करना है मैं कर लूंगी. मैं तो किस तरह से आई विल फिगर इट आउट, आई विल डू इट, और नहीं करना तो नहीं करना. बट आई डोंट नीड समवन टू टेल मी टू डू इट. जस्ट छोटी सी बात है, आपको पढ़ाई करनी है, मुझे किसी को बोलने की आज तक जिंदगी में जरूरत नहीं पड़ी कि बेटा कल एग्जाम है तो पढ़ लो. मतलब वो कमरे से बाहर खींच के ही मुझे निकाल के अब खाना खा लो, अब ये कर लो, अब वो कर लो. यू सी व्हाट आई एम सेइंग? सो यू लॉट ऑफ चिल्ड्रन आर सेल्फ. entrepreneurship is not for everybody. So my younger brother ऐसे नहीं कर पाओगे तुम. उसने कर लिया, फिर भी he managed it. It's because, you know, survival का issue था. You suddenly know that X amount of money is coming into your bank every month in a corporate job, and he was at a very very senior level, and now suddenly it's zero. So I said ये भी एक पूरा का पूरा emotional वो है, psychological game चलती है, because तुम 5-6 महीने जब तक business setup नहीं होता, zero money आता है तुम्हारे. So I told him, I said you'll be eating out of your savings which you've never done your entire life. You've just been putting, right? So he says, oh yeah, I didn't think of it like that, you know. So but again, I guess to achieve something, you have to leave your comfort zone. आपको रिस्क लेना ही पड़ता है कहीं ना कहीं. हाँ, बट वो भी डिपेंड करता है आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी कितनी. यू नो, ही इज अ वेल्थ मैनेजर, ही मैनेजेस ऑल माय वेल्थ. सो देन अब समटाइम्स व्हेन आई बिन जाके अपना, आई एम वेरी सिंपल एज फार एज मनी इज कंसर्न्ड. इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज वन, इट इज विद माय ब्रदर, द मोस्ट ट्रस्टेड पर्सन अंडर द सन फॉर मी, एंड वी हैव अ ग्रेट रिलेशनशिप, टच वुड 1000 टाइम्स. सो मैं तो देखती हूँ अच्छा इतने पैसे बन गए, वेरी गुड. देन आई एम लाइक वेल डन अमित. एंड देन जहाँ पे देखती हूँ अरे ये तो क्रैश कर गई मार्केट, तूने मेरे पैसे कहाँ लगा दिए, तो वो हंसता कहते तो शांति से बैठ जा, कोई बात नहीं. The point I'm just trying to make here is that he's damn good at doing wealth management. रितिका, आजकल जो हम बोलते हैं पर्सनल ब्रांडिंग जैसे कर रहे हैं हम लोग, या नेटवर्किंग, कितनी इम्पोर्टेंट है एक बिजनेस के लिए? Critically important. And again, depending upon the kind of business you're in. See what happens is networking को ना, मुझे तो याद है मुझे किसी ने बड़ी देर पहले बोला था कि तुम नेटवर्किंग के अलावा भी कुछ करते हो, मतलब इससे रहती है. I said, what do you just do that, or you just network? I said, no, look, one, I'm an extrovert, so for me, going up to people or being in places where I don't even know a single person is very okay. मतलब it's not that I will die out of embarrassment or discomfort कि अरे मुझे कोई जानता नहीं यहाँ पे. I'll find a person, I'll figure it out or whatever, right? But I think networking, especially for women, is very underrated. Because, you know, you're just hanging around that place doing nothing. Networking क्या होती है? तुम बैठ के चाय कॉफी पी रहे हो, कुछ डिनर कर रहे हो, कुछ लंच कर रहे हो, किसी मीटिंग में चले गए, कहीं पे कोई क्लास हो रही तुम वहाँ चले गए. नेटवर्किंग यही होती है. This is what networking is all about. Now, women usually, because of the kind of
work pressures they have, one of their own business and two of taking care of the household. You know, you can't run away beyond a point from that. So उनको ये लगता है कि ये क्या कर रहे हैं हम लोग, उनको वेस्टेज ऑफ टाइम, एनर्जी, एफर्ट लग रहा है कि हर एक चीज में से कुछ ट्रांजैक्शनल निकलना चाहिए, बिकॉज हमारे पास टाइम कम होता है. आपके दिमाग में ऑलरेडी 100 चीजें चल रही होती हैं घर के बारे में, इधर उधर, पेरेंट्स, इन लॉज, इट्स जस्ट अ ह्यूज रोलर कोस्टर राइड. सो हम लोग ना हर एक इवेंट पे, हर एक मीटिंग में हम ट्रांजैक्शन ढूंढते हैं कि इसमें मैं इमीडिएटली व्हाट इज इट दैट आई कैन टेक. हम लोग नहीं, हमें सिर्फ किटी पार्टीज पे हैंग आउट करना आता है, हमें बिजनेस के लिए हैंग आउट करना आता नहीं है. सो दिस इज समथिंग वी नीड टू चेंज, बिकॉज इट इज ओनली व्हेन यू सिट विद people who are entrepreneurs, talk to them over chai, coffee, whatever, you will learn something. You will understand how they've built this thing. मेरे लिए तो it has been absolutely, because I was a housewife before and then moved to being an entrepreneur out of distress, no other design or anything. I had no idea the way an entrepreneur looks at the world. मतलब मुझे तो entrepreneurship का ये भी नहीं आता था. But once you started being a part of a community, you started mixing with people. People talk about similar issues. People talk about similar things. घर वालों के usually agenda driven होते हैं. इस community में, इस क्या किसी भी community में largely people are not agenda driven कि अच्छा तुम्हारे धंधे को क्या हो सकता है. मतलब they will come and tell you, यार why don't you try this, मैंने ये ज़मीन खरीदी थी, मैंने ये issues किए थे, तुम tax में ये कर लो, ऐसे saving हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा. When you meet different people, lot of, मतलब in a That's circle, how you grow as a person you also. learn and grow as a person. I mean, even if you other people have a different point of view, it's still personal growth for you. Now you know something that okay, ये भी एक तरीका है सोचने का, सही गलत कौन ही decide कर रहा है. You may not agree with it, but at least you know that there are people around the world who are thinking like this. So I always say that, and we are, you know, entrepreneurship can be a very lonely journey because a lot of people, अगर तो घर में आपके आसपास लोग हैं, then you are pretty much, you know, I would say just lucky that, you know, people can guide you, tell you, you can have conversations, you need sounding boards, right? And one more thing I suggest to women entrepreneurs, that always, always, always have a mentor on board with you. आपकी लाइफ, आपकी entrepreneurial journey 50 to 60% sort हो जाती है. Because when you get, if you have a good mentor, because it happened to me, मेरी तो खैर 95% ही लाइफ बदल गई थी. But what a good mentor will do is, one, they will use their network and their resources to help your business. Two, on days when you feel absolutely low, जो हर एक entrepreneur के मन में महीने में 2 या 3 बारी तो ये बात आती आती, कहाँ फंस गए यार, छोड़ो ये सब, नौकरी कर लेते, इतना कलेश तो नहीं होता कम से कम डील करने के लिए. So on the days when you're feeling like quitting, you feel like you've made some bad decisions, etc., your mentor really keeps the flag running high of optimism. वो बहुत जरूरी है, because we are human beings, whether man or woman. There are days when we will break down. There will be days where we will question, you know, कि हम क्या ही कर रहे हैं जिंदगी में. 2 client drop हो जाते हैं तो मेरे घर में मेरे बच्चों को भी पता चल जाता है आज मम्मा का मूड खराब है. 2 और ऐड हो जाते हैं तो मम्मा हैप्पी है. तो you know, so these are part of daily life for an entrepreneur. So having a mentor on board keeps you a little balanced. मैं ये नहीं कहती हूँ आपकी जिंदगी सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, but if you have a good mentor, they can guide you, they can, उन्होंने दुनिया देखी होती है, कुछ आपको एडवाइस कर सकते हैं. 100% करेक्ट नहीं होगी, 50 ले लो उसमें से कुछ, बट लाइफ बहुत आसान हो जाती है, स्पेशली योर एंटरप्रेन्योरियल लाइफ. एंड पीपल हु आर स्टेपिंग इनटू इट फॉर द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स, उनके लिए तो बहुत ही लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंसेस होते हैं ये. देयर आर टाइम्स दे डोंट इवन अंडरस्टैंड द लैंग्वेज. मतलब एक कॉर्पोरेट की एक अपनी लैंग्वेज है, एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम की एक अपनी लैंग्वेज है. वो वोकैबुलरीज दोनों बहुत अलग अलग है. आई ऑल्सो लर्नड इट द हार्ड वे ओनली टू, थैंकफुली मेरे पास मेंटोर थे, so it was easier for me to kind of, you know, he would tell me ऐसे नहीं ऐसे कर लो, मतलब लिटरली राइट the revert of an email for me and then say copy paste करो और भेज दे इसको type kind of a thing. So I think everybody should have a mentor, a board of advisors, or whatever you want to call it for their business. That is critically important. Okay, if you want to give an advice कि एक women कहाँ से business start करे, the practical ways, so what would be that? So 5 practical ways. 5 practical ways, okay. The first thing is that whatever it is that they are building, उसकी एक validation होनी चाहिए, which means that they need to have a couple of
paying customers. And I'm not saying कि घर वालों को बेचा, मैंने suppose करो cream बनानी शुरू करी, so I'll say कि यार एक बारी प्रदीप just take a look and see if this works for you. घर वालों को कुछ कर दिया, but at the end of it all you need to have somebody and lots of people who will buy that product for you. That is the first thing. So जब तक आपके product की validation नहीं हुई है, don't get into it, because वो सस्टेन ही तब करेगा, वो रिश्तेदारों को बेचने से सस्टेनेबल नहीं होगा, फिर तो इट इज जस्ट अ लाइफस्टाइल थिंग. That is for that networking is more important. Networking is also important, but networking maybe you need to have people who buy that from you. So you need to know that you're solving a genuine problem for someone. You're not creating something that you feel the need for. So एक तो market validation बहुत जरूरी है. And when I say market validation, I mean you're having a paying customer. ठीक है ना, कि not just a customer, paying customer, जिसने तुम्हें actually वो 500 रुपए, 1000, 2000 जितने का भी तुम्हारा प्रोडक्ट है, तुम्हें actually वो दिए और तुम्हारा प्रोडक्ट खरीदा है और उसको उसमें वैल्यू लगी है, शायद दोबारा से खरीदने आएगा whatever. So that is market validation. Second, again, have a couple of people who are on your mentor list. You know, you can have 2 mentors, 3 mentors, 4 mentors, because बहुत सी चीजें entrepreneurship के बारे में आपको नहीं पता होती हैं. So कोई तुम्हें ये गाइड कर देगा कि यार गवर्नमेंट के ग्रांट है, कहीं से ग्रांट्स ले लो. So you know, it is a whole gamut of people who will come. It will not take care of your entire journey, but it will make it easier for you. Okay? Then third, the power of social media. I think every brand, and I was surprised even when I was meeting my other mentees, वो किसी ने भी social media के ऊपर investment नहीं करी हुई थी. Okay. And I don't mean that उसमें happy दिवाली, happy होली वाले वो डालो, but कुछ तो content अपने product या service के बारे में डालो. Even if it is means just basic, and now ChatGPT के साथ वो basics भी नहीं है, you can go to any level that you want to. So use that. 3. Fourth, be a part of communities. अब तो women communities भी, I think चंडीगढ़ में बैठे बैठे, as I speak to, we have 6, 7 of them, and each one of them is doing a phenomenal job. So it's great to have that kind of sisterhood built, and you know, where you can promote, you can talk about your business issues, and women align themselves far better. They feel a more safer environment. So अगर कोई ऐसी community है तो वो भी join कर लो, but also be a part of an entrepreneurial community. You also need to understand how the other half is thinking and how they are managing, because I realized that I also was not too much of a risk taker, but the men around me in my entrepreneurial ecosystem, करके तो देख एक बारी, shot तो मार type kind of a thing. So sometimes you need that little push also from the right set of people, right? This is number 4. And number 5th is your aligning your stakeholders. उसके बगैर आप function नहीं कर सकते, because आप कहीं ना कहीं पे अपने आप को या अपनी health या कहीं पे किसी चीज पे compromise कर लोगे, because then you want to be that perfect this thing, and you know, businesses do demand time out of you, and at the end of the day 24 घंटे ही होते हैं सबके पास. Nobody has 36 hours. So all of us have 24 hours. So you have to prioritize what will work and what will not work. And leanest way to do it is via social media. अब तो ChatGPT के साथ तो उसमें भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. पहले हम फिर भी बोलते थे स्मॉलर बिजनेसेस के लिए there were these freelancers जो 5,000 10,000 रुपए महीने के लेते थे, and they'll say हम तो आपका Instagram हैंडल कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे. Now you don't even need that investment. And there is a new trend, especially for women entrepreneurs. They have started becoming the brand ambassadors of their own products. Thank you so much, Ritika, for sharing the insights with us. Thank you so much for joining us today. Thank you so much, Prabdeep, for having me over. I think conversations like these are phenomenal, because not only are you sharing your experiences with other people, but I also believe that it helps you introspect and kind of also figure out where are you coming from. So thank you for giving me the opportunity. Thank you. And to everyone watching, if you like this video, do subscribe our YouTube channel, The Real Room with Prabdeep. See you in the next video. Till then, take care. Bye-bye.